Hello my dear friends, I hope you are well. I am Sandeep and most welcome again at this YouTube channel, officially Sandeep. I hope you are well and you are doing well. So my dear friends, if you are a learner, you must learn something well and you can change your entire life. If you are a student, you focus now at your education, how you can learn well and how you can change yourself, how you can make well of people, of another people. If you are a student, if you want to do, my dear friends, there is nothing too impossible in your life and you can do everything. If you are making ambition in your life, if you are a student and you think that we have to go in this way, we have to reach and we have to get up my ambition in my life, my dear friend, do struggle and give lot of time to achieving for your ambition. I hope you can do well in your life and you can succeed in your life, my dear friends. Also, I am a learner and we are providing to you how you can improve your communication skill, how you can learn English and how you can speak confidently as for me. And if you are watching to me, my dear friends, you can keep your thoughts in the comment section and I hope you can learn something well here, my dear friends. We are giving to you, we are advising to you, we are motivating to you. Can, if you are watching to me, my dear friends, if you think that how you can develop your confidence, how you can develop your communication skill, how you can speak of the stranger people, my dear friends. If you are fear and if you feel fairness to speak of the stranger people, my dear friends, you must watch to me and I will told you some tips in the video how you can remove your confidence, how you can remove your disconfidence, how you can improve your confidence, my dear friends. In this video we are talking to you and we would talk to you at this topic. If you are a learner, you must know that, my dear friends, it is not a problem only, it is problem of lot of people and lot of person. If he is a learner, if he want to speak English, my dear friends, so if you want to talk of people, my dear friends, if you are feel fear, you must know that you have to learn lot of us. If you are not well, my dear friends, you will feel hesitate, you will feel nervous that time if you have not knowledge. If you would think that I am well of them, you would never understand at this talk. I will not get speak them, I cannot speak, I cannot talk of the stranger. So after some time what become to me also it is become to you. आपके साथ भी होता होगा। जैसे कि हम लोग किसी से बात करने जाते हैं तो सोचते हैं क्या बोलेंगे वहाँ पर, व्हाट वी वुड स्पीक फ्रंट ऑफ देम, एंड सोचते हैं कि कुछ वर्ड मिस्टेक ना हो जाए, सम वर्ड not will be wrong if we would say something of them. It is common of everyone, my dear friends. Confidence level, यदि आप अपना इंक्रीज करना चाहते हैं, if you want to increase your confidence level, my dear friends, you have to make habit to talk of people. आप छोटे लोगों से बातें कीजिए, अपने लेवल से बातें कीजिए और उनसे अधिक लेवल से जब आप बात करेंगे, आई होप आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो जाएगा, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी इम्प्रूव। लेकिन यदि आप स्टेज पर कुछ बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक ऑन द स्टेज, माय डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर वाचिंग क्राउड ऑफ पीपल इन योर हार्ट, इन योर माइंड कम फेयर, यू आर अफोर्डिंग वाचिंग ऑफ देम। जब हम लोग भीड़ के सामने बोलते हैं या कुछ बोलने की सोचते हैं, मेरे दोस्त, इन द माइक एज hello my dear friends, I am Sandeep and we stand here, we are going to tell you how you can improve your communication skill, how you can learn English and how you can speak.
First of all, good morning, respected teacher, parents, and my dear friends. I have stand front to you on the stage, and I will told to you how I have improved of my communication skill. My dear friends, first of all, you have to know make of the sentences, because I have studied in Hindi medium college, Hindi medium school, and first of all I have to learn grammar. Then we are getting speak from you, my dear friends. If you are not studying in English medium, or if you are not studying in CBSE board, if you are thinking you have to improve English, my dear friends, you have to learn grammar, and I hope this grammar will go to provide to speak English how you can improve. If you would know make of the sentences, I think that it is help lot of us to you. as जैसे कि आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप हैं कहाँ पर, वेयर आर यू स्टैंड। एंड यदि आप कहीं कमेटी कर रहे हैं, जैसे कि सम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, समवन आर प्लेइंग क्रिकेट एंड यू आर डूइंग कमेटी, बॉलर कास्ट ऑफ द बॉल फ्रंट ऑफ batsman. My dear friends, how we will do committee? I think that someone would not get to speak how they have to speak of them. It is a difficult task, but not everyone would do. You have to learn before. जैसे कि बॉल फेंकना क्या होता है, इसका बेकअबुलरी वर्ड आपको याद होना चाहिए। कैच पकड़ना, कैच आउट का तो आप कहेंगे आउट, कैच पकड़ेंगे तभी आप आउट करेंगे। विकेट, थ्रो ऑफ द विकेट ऑफ द बॉल, एंड बैट्समैन नॉट हिट ऑफ हिज बैट, ही इज आउट। सो आपको सोचना कि आप कहाँ पर बोलने जा रहे हैं, व्हेयर यू आर गोइंग टू स्पीक एंड व्हाट यू हैव टू स्पीक। यदि आप लोगों को मोटिवेट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अलग तरह से बोलना है। इफ़ यू आर गोइंग टू डू मोटिवेट ऑफ पीपल, यू हैव टू स्पीक समथिंग डिफरेंट देयर प्लेस, एंड यू मस्ट नो दैट एट दिस टाइम, माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर गोइंग टू ऑफ ए लीडर, किसी लीडर के साथ में जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग विथ ए लीडर एंड यू हैव टू गिव स्पीच फ्रंट ऑल ऑफ देम, तो वहाँ पर आप कुछ अलग तरह से देंगे। My brother and sister, elder and older and respected people, if you will reach of the parliament to me, I will do well work for to you and I will complete your all desire. मैं आपका सब कुछ सभी इच्छाएं आपका पूरा कर दूंगा। एंड आई विल मेक दिस रोड, आई विल मेक योर होम। वादा कीजिए, प्रोमिस, यू विल डू प्रोमिस लॉट ऑफ अस इफ यू वांट टू मेक ए लीडर इन योर लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू मेक लीडर इन फ्यूचर, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्टडी लॉट ऑफ अस, माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे, इफ यू विल गो ऑफ द इंजीनियरिंग, यू हैव टू स्टडी लॉट ऑफ अस। बट यू विल सी, माय डियर फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इफ यू वुड सी who is completed of engineering, he is getting speak very fluent. I have watched lot of people who is completed of his engineering 4 year as बीटेक। बीटेक को आपको ग्रेजुएशन, बीटेक जो होता है ये डिग्री आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है। बीटेक इज ग्रेजुएशन। इफ़ यू आर कंप्लीटेड बीटेक तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यू कैन डू प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। And after some time I think that I have done some mistake in my life. First time I have completed our diploma, I must note it at this time, in 3 year, and 3 year is taken of 12th level only। या सिर्फ आपका 12th बेस तक
ही मान्यता प्राप्त है। यदि आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यदि आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यदि आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटो इंजीनियरिंग करते हैं तो ये आपका सिर्फ 12th लेवल तक ही मान्यता प्राप्त है मेरे दोस्त। लेकिन यदि आप इफ़ यू आर नॉट वेल इन इंग्लिश तो आप डिप्लोमा कीजिए। इफ़ यू आर वेल, इफ़ यू नो दैट, बिकॉज इंजीनियरिंग की जो बुक होती हैं यदि आप बीटेक करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश में प्रोवाइड होगा सब। बीटेक जो होता है क्लास 12 के बाद होता है, ये सब इंग्लिश में रहेगा आपका 4th ईयर का। यदि आप बीएससी कंप्लीटेड है तो यह हो सकता है आपका 3 ईयर का हो। टेक्निकल किए हैं डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद में यदि आप बीटेक करें तो आपका 3 ईयर। तो माय डियर फ्रेंड्स, what we are talking to you, how you can improve your communication skill, how you can learn English, how you can improve yourself and how you can increase your confidence level my dear friends। where हम लोग कहाँ थे एंड हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। अरे व्हाट इज पी, क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ थे एंड वेयर वी आर रीचिंग, आई डोंट नो डेट। बट माय डियर फ्रेंड्स, मेक योर सेट योर माइंड what you have to do in your life, what you have to gain in your life and how you have to do, only not set your mind। if you want to do something well, you have to focus, you have to do struggle, you have to do a lot of time to you। कहते नहीं ये एक तप है, तपस्या जिसको बोलते हैं। एजुकेशन जो होता है ये क्या है, तपस्या ये है। यदि आप इफ़ यू आर गिविंग टाइम honestly add to you my dear friend, there is no one to stay to you which you could succeed in your life, जो आपको रोक सके कि आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। there is no one as, यदि आप अपने आप को पूरे ईमानदारी से टाइम दे रहे हैं, if you are giving time totally and honestly to you my dear friends, पूर्णतः, one day you will make a star, if you will success in your life anywhere field, if you are going my dear friends, but do work। if you are going in medical line, if you are going in engineering line, you do work and give time honestly to you for your ambition, for your goal in your life, how you have to reach, how you have to gain edge, you have to do work, lot of us my dear friends, and you can change everything in your life। if you are thinking only you are the most unlucky person in the world, then you are thinking wrong। also I am, मैं भी हूँ उनमें, I am them also मैं भी हूँ उनमें। तो ऐसा कहीं मत सोचना, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो मेरी भी गिनती, यू मस्ट काउंट टू मी देम, उनमें मेरी भी गिनती कर लेना मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इफ़ यू आर वाचिंग टू मी एंड माय डियर ओल्डर एल्डर एंड respected people, if you are watching to me, we have to need your support and I hope what we are going to tell to you, I don't know that anywhere, but push the bell icon someone says detach। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने थॉट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। यदि आप कुछ लिखते हैं तो कुछ अलग एनर्जी मिलती है, समथिंग डिफरेंट एनर्जेटिक एनर्जी कम इनसाइड ऑफ माई हार्ट, इन माई बॉडी व्हेन वी आर वाचिंग माई डियर फ्रेंड योर नोटिफिकेशन। So keep your thoughts in the comment section, and my dear friends, if you are watching first time, also I am as to you, so thank you and love you। if you are watching first time, you can keep your thoughts in the comment section। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, जय हिंद, लव यू, आई लव यू। कैसे बनाते हैं यार, मुझसे तो बन नहीं रहा है, आई एम डूइंग रॉन्ग समथिंग, वाई। ओके, थैंक यू, all of you। if you are watching to me first time my dear friends, you can subscribe to me and you can share with your friends, you can like this video and you can
write your thoughts in the comment section. Thank you all of you.